बोलो बेटा, what is 27, 29, 210, average rate of tax 211, 214, 247, 225A. Come on, define India. India covers territory, territorial waters, continental shelf and exclusive economic zone, seabed and subsoil underlying such water and airspace. I taught this concept to you 1.5 months back. Still answer is flowing like that. So amazing. आप खुद इसे रियलाइज करो कि दिमाग है, नहीं है करके कुछ नहीं है. थोड़ा उसको मतलब सेट करना पड़ता है. जैसे गाड़ी का सर्विसिंग करते ना, वैसा ये ब्रेन को भी प्रॉपर टाइम पे सर्विस करके उसको बोलना पड़ता है, भाई दिमाग है भाई, बोलना भाई. मतलब सबके सब ऐसा आंसर सी पेट सब सॉइल, ऐसा मतलब फ्लो में जा रहे हैं आंसर बस. नेक्स्ट 231, 234, सेक्शन 3, 229C, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, रेजिडेंशियल स्टेटस 61, 66, 6266, 63, 62 and 64, others, section 7, income deemed to be received in India. Okay, no? Next section I will ask, think properly and tell. Section 8. Wonderful, excellent. कौन था वो? Very good. Taxability of what income? Dividend income. देखो बुक में, अदर्स उसमें लिखा था मैंने. अदर्स उसमें yesterday ने, day before yesterday, first वही start किया मैं. Taxability of dividend, normal dividend, interim dividend. Normal dividend is declared in the AGM. Interim dividend between two AGMs. Interim dividend is taxable when it is unconditionally made available to the shareholder. बेटा बताया था ना ये चीज? Which section all this? Section 8. Excellent. Come on. Section 9. Income deemed to occur as in India. 10.1. From land in? Exactly. मैं जो क्वेश्चन दिया था उसमें केन्या भी था. थोड़े लोग केन्या को भी लिख दिया. एग्जाम 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 एग्जाम. चले जाओ केन्या को, या केन्या को लेके आओ इंडिया में. 10.2. Share of income from HUF. 10.2A. Share of income from partnership firm. 10.4.2. Don't forget here, important. Interest on what account? Full form के? Non-resident? वो बोल के कंफ्यूज हो रहा है, सोच रहा है अरे ऐसा कैसा मुझे करेक्ट आंसर आ गया. नहीं, some category of students will be there who write the exam, correct perfect answer, then think, how come I can get right answer? मुझे correct answer कैसा आ सकता है? Then strike करके गलत लिखते हैं फिर. एक स्टूडेंट था, मतलब याद नहीं है मुझे, ये recent exam में आंसर was correct, strike off and then down wrong answer. तो वही करा, वही बोल रहा. मार्क्स दिया फिर भी मैंने. So sweet of me. 10.7. Allowances per quits paid by government of India. एक महीना पुरानी बात है, फिर भी आंसर आ रहा है. गुड. 10.11A. ये तो आई एम श्योर एवरीबडी विल रिकलेक्ट यू व्हेन इट कम्स इन द एग्जाम. नेक्स्ट 10.17. Daily allowance and constituency allowance to MPs and MLAs. 10.17A. Awards and rewards. Cash or in kind. Example for that? Padma Bhushan, Padma Shri, Arjuna Award. Correct, no? Padma Vibhushan, Bharat Ratna. Exactly. 10.18. Bolo. A. Pension and family pension. 2 gallantry award winners. 10.19. Family pension to other armed forces. Correct, no? Rahul, please रिवाइज करना है, ठीक है ना? नेक्स्ट 10.26 AAA. क्या है इसका एग्जाम्पशन, क्या है बेटा? इनकम फ्रॉम एनी सोर्स इन द स्टेट ऑफ सिक्किम. देन डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया इज एग्जाम्प्ट. वही यस वही सर. नेक्स्ट व्हाट इज सेक्शन 22, 23.1, 23.2. Self-offer, what is the starting point?
Less what? Do we have limits for interest? What are the limits? Maximum 30,000. But maximum 2 lakh when 3 conditions are satisfied. What the first one? Loan is taken on or after 1/4/1999. It is taken for acquisition or construction. And it is done within a period of. And if question is silent, we'll assume that conditions are satisfied. Don't assume we have taken for repair. Assuming we didn't satisfy the condition. Clear, no? 23.3. Part of the year let out, part of the year self-occupied. What will you do? Part of the let out, part of the self-occupied? We will treat as if it is let out. Good, very good. 23.4. More than 2 self-occupied houses. अरे ये तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व करे अभी तक अभी क्लास में 2-3 करे थे एग्जाम में भी एक हो गया फुल प्रैक्टिस भी हो गया वो गुड 23.5 हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड 24A 24B 25 interest payable outside India is not allowed as deduction if tax is not deducted at source. Remember that word outside India, that is very important. Next 25A recovery of unrealized rent and arrears of rent 26 27 correct no 172 permanently or for a long time AOP BOI AJP formed for short duration or purpose 175 person likely to transfer property to avoid tax 176 कैसे याद है बेटा क्या पता अरे इसको देख हमको क्या पता याद हो गया ऑटोमेटिक रिवाइज किया तो याद हो गया बस और कुछ नहीं सर गॉड हैज गिवन अ ग्रेट ब्रेन टू अस ग्रेट ब्रेन टू अस मैं भी सोचता था यार हम कैसे कर सकते सीए मैं जब सीए में आया ना मुझे खुद को भी नहीं पता मैं सीए बनूंगा मतलब इतना ही था अंदर जो भी हंस रहे और सोच रहे मैं सीए नहीं बन सकता उनको दिखाना है सीए बनना है उसके लिए मैं तो सीए बना लिटरली बोल रहा हूँ मैं ये तक भी नहीं सोचा कि बाद में क्या करूंगा सीए बनने के बाद क्या करना है वो सब प्लानिंग कुछ नहीं है लाइफ में बस इतना पता था सम पीपल आर थिंकिंग आई विल नॉट बिकम सीए उनको दिखाना है हम सीए बन के और मेरा तो स्पेशल केस है बिकॉज मदर साइड फादर साइड कोई सीए नहीं है तो कंप्लीट फोकस पे फिक्स हो गया था उसके लिए मेहनत किया मैं तो बस और कुछ नहीं एनीवेज कैन आई प्रोसीड मैडम थैंक यू सो मच 87A 288A 288B 112 112 long term capital gain general rate what is the general rate 112A पूरा बोलो long term capital gain on sale of equity shares or units of equity oriented mutual fund or units of business trust through recognized stock exchange on which is taxed at the rate of and for shares STT should be paid at the time of purchase as well as sale याद है ना बेटा same case if it is not long it is short term 111A 15% any other short term general rate that is normal rate that is nothing but slab rates 115BB casual incomes 115BBE unexplained incomes unexplained investments expenditures and all correct no beta what rate ये तो सब करे थे बराबर ही ठीक है आई एम नॉट मच वरीड नेक्स्ट व्हाट एल्स कम ऑन व्हाट इज 45(1) charitability section 45(1)A insurance compensation next one only for knowledge यूले याद है ना बेटा स्टोरी बहुत प्रैक्टिकल चीज है वो एग्जाम में नहीं आएगा बट बहुत प्रैक्टिकल है 45(2) conversion of capital asset into stock in trade very very important section we solved questions also in the class super duper important 45(2)A securities in demat form follow what method FIFO 45(3) partner to firm 45(4) what is the difference in 3 and 4 वही 45(3) पार्टनर टू फर्म है 45(4) फर्म टू पार्टनर है उसमें इसमें कॉन्सेप्चुअली फर्क क्या है अच्छा ये पार्टनर को टैक्सेबल है वो फर्म को टैक्सेबल है वाह क्या बात है करेक्ट है और in 45(3) we will take book value 45(4) we will take market value अरे ये तो कॉन्सेप्ट है ना यार फाइनल में चल मेक यू क्रेजी इन दिस सेक्शन एक ही सेक्शन में 1 घंटा पढ़ाऊंगा कम से कम एनीवेज 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन क्लियर ना बेटा 45(5)A joint development agreements don't forget very important 46(1) distribution of assets on liquidation
is not regarded as transfer in the hands of company. 46.2. Shareholder is taxable. 47. Transaction which are not regarded as transfer. 48. Computation mechanism. 49.1. Cost to previous owner. 50. Depreciable asset. 50A. Power sector. 50B. याद है ना बेटा, we solve one question also. Mr. A of Akash Enterprises. 50C. अगर ये गलत बोले ना बेटा, नेक्स्ट 50CA unquoted shares. 50D selling price not determinable, take fair market value. 51 advance money forfeited before 1/4/14 reduced from cost on subsequent sale. यार बेटा बोलना यार. नेक्स्ट 55A reference to valuation officer. ठीक है ना बेटा? I discussed that with you. When the difference is more than 15% or difference is more than 25,000, AVO can refer to VIVO. This is the last section what I taught you in capital gains. Clear? Next up answer मत दो. देखेंगे some of them. सर क्लास स्टार्ट करेंगे ना? कब का स्टार्ट हो गया? आप रियलाइज नहीं करे बस. Getting my point? 54. Applicable to whom? What I'll ask you, tell that. Applicable to whom? Individual and HUF. What is sold? Long-term residential house property. What is purchased? What is the time limit? 1 year before, 2 years after in case of purchase. Construction within. So let me honestly tell you, if you don't know this provision, you can't solve any problem. Waste of solving any problem if you don't know the provision. पहले प्रोविजन परफेक्ट हो जाओ. अगर 1-2 स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी सर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए कैपिटल गेन में, मैं तो डायरेक्टली ये बोलूंगा भाई प्रोविजन परफेक्ट हो जाओ भाई पहले, उसके बाद तू प्रॉब्लम देख, फिर तू प्रॉब्लम सॉल्व कर, वापस परफेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली. क्लियर ना? डायरेक्टली इफ यू सी प्रॉब्लम यू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. फर्स्ट प्रोविजन, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, नो सेकंड थॉट अबाउट इट. दैट्स द ओनली थिंग ब्रेड एंड बटर फॉर एनी स्टूडेंट. अगर वो नहीं है कुछ और है मतलब गया, फिर चलते रहेगा केसरिया तेरा attempt मेरा. Come on, what is 54? So long term residential house purchase time limit 1 before 2 after construction within 3 years. स्पेशल पॉइंट क्या है बेटा उसमें? हाँ एक ही घर ले सकते, बट हाँ तो बोलना पहले 2 crores का पॉइंट बाहर आना, उसके बाद वंस इन लाइफ टाइम वाला वर्ड बाहर आना. क्लियर नो? गुड. एटलीस्ट पूरा बोले सर एक एक पीस बोले ना, आप ऐड कर दो पूरा. मैं एडजस्ट कर लूंगा बट एग्जाम में वो एडजस्ट नहीं कर सकते. ठीक है ना? 54B चुप. अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड. अरे भाई तू एक चीज रूरल बेचे तो टैक्स एग्जामिशन की जरूरत ही क्यों है? तू सोल्ड अर्बन, परचेस्ड एनी एग्रीकल्चरल लैंड, टाइम लिमिट विद इन 2 years इफ इट इज परचेस. कंस्ट्रक्शन थोड़ा तो इज्जत रखो. कंस्ट्रक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. सम ऑफ देम क्या है ये? व्हाट इज स्पेशल पॉइंट? इट शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस बाय एसएससी और हिज पेरेंट्स फॉर एटलीस्ट इमीडिएटली प्रेसिडेंट ट्रांसफर. 54EC ये मस्त बोलते हैं आप लोग. एप्लीकेबल टू होम? ऑल मतलब ये ऑल कौन है? एनी एसएससी. ये सब मत बोलो यार ऑल, कुछ तो भी मतलब यार प्लीज यार, जो मन में आएगा वो मत लिखो यार. मीनिंग एक ही होता है ऑल, बट फर्क पड़ता है यार बहुत. दैट्स एनी एसएससी. व्हाट इज सोल्ड? लैंड और बिल्डिंग और बोथ. व्हाट इज परचेस्ड? बॉन्ड्स ऑफ एनएचएआई, आरईसीएल, पीएफसीएल, आईआरएफसीएल. टाइम लिमिट. प्रवीण आरईसीएल फुल फॉर्म क्या है बेटा? आरईसीएल. आंसर तो मस्त बोला, फुल फॉर्म बोल. बस ऐसा है सीन. दिव्या, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीएफसीएल. पावर, बस पावर पे रुके. कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेशन
Government entities will not have corporate. They'll be called as corporation. Some friends. किधर है? And they're asking their friend, किधर है? मुझे क्या पता? अच्छा तुझे भी नहीं पता? ओ मुझे भी नहीं पता. जब तक वो हो गया क्या बेटा, फटाफट आंसर आना चाहिए, इतना गैप नहीं लेना. आंसर आ रहा है बट फटाफट आना चाहिए, वो टाइम गैप उतना ले लेना चाहिए. ठीक है ना? 54F. ए sold any long term capitals other than house property. Purchase what? House property. Time limit 1 year before, 2 years after. Construction within 3 years. Good. Special points कितने हैं इसमें? दो याद रखना है. एक तो मतलब दो स्पेशल पॉइंट्स याद रखने हैं. एक तो you should not have more than a residential house. Second, formula. What is the formula? Amount invested into long term capital gain divided by net sale consideration. Sir, I hope you're enjoying revision. चालू करूँ क्या, छोड़ दूँ क्या इसको? Please, I'm spending my time. Okay? I don't think this is all passing on time. This is very important. I mean, case area से तो बहुत better ही है. तो please use it. Next, what is section? Something I wanted to ask. What was that? Something was going in my brain. Rule 115. Conversion of foreign currency into Indian currency. याद है ना? SBI rate, last date. SBI buying rate, because we are selling, bank is buying. We'll see from bank point of view. Correct? Good. Power of writing. Rule 4. कितने कंडीशंस है भैया? तू कुछ नहीं बोल रहा है, बस लास्ट में जो बैठा है भाई आंसर नहीं आ रहा है. प्लीज देख के खुश हो रहा है तू, अरे कितना अच्छा लग रहा है देखने में. वो ठीक है यार, अच्छा लगता है दिखने में, बट अपने को बोलना चाहिए. जब मुझे अच्छा लगेगा ना, आपको अच्छा लग रहा है, नाइस, बट आई शुड आल्सो फील हैप्पी. नो, क्या ढूंढ रहे बेटा? कुछ नहीं ना? बोलो कंडीशंस क्या है? टेनेंसी इज बोनाफाइड. हाँ. Default tenant has vacated or steps have been taken to compel him to vacate the property. Third, is not an occupation of any other property of the owner or assessee. Your wish. Last one. Assessee has taken all reasonable steps. ठीक है. क्या था वो डायलॉग? अच्छा ठीक है. सर, आर यू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट एवरीबॉडी? सर बोलो बेटा प्लीज. कम ऑन, गुड. नेक्स्ट, व्हाट इज आंसर फॉर रूल 7 other than tea, coffee, rubber? 7A. What is answer for rubber? 65. 7B. Coffee. दो क्या? दो. ब्लैक कॉफी, व्हाइट कॉफी. ये क्या? अरे ये क्या भाई? ये क्या है? मतलब ये समझाने में, अरे दो कैटेगरी ऐसा बोलते ना कोई भी. अब ये क्या है? ऐसा मतलब या प्रवीण भाई क्या भाई? बोलो ग्रोन एंड क्योर, गॉट इज द परसेंटेज? 75 65. ए 75 25. नेक्स्ट क्या है वो? 60 40. वेरी गुड. ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड. व्हाट परसेंट? 60 40. एक्सीलेंट. सर क्लियर है ना? गुड. रूल 7C. स्मार्ट बॉय. रूल 8. विच टी? ओनली वन टी. एक ही टी. गुड. नेक्स्ट. Sir, we clear with that? Good. Advance tax. What are the due dates? 15 June, 15 September, 15 December, 15 March. Percentages. Total 100. Sir, clear है ना? वो concept याद है ना? And in case of somebody covered under presumptive income under 44AD, only one installment I told. And who is that 44AD fellow? Within 1 week, I'll make you perfect. Why? PGBP. There we will learn.
Clear, no? Who is at 4485? We'll talk in detail. Only one installment, 15th March. Then 234A. Fantastic. Applaud once. Clap for her. Interest for delay in filing return of income. And interest is what rate? 1% per month or part thereof. And income tax is very shrewd. Even if it is 1 month, 1 day, we'll take interest for 2 months. Next bolo. 234B. Interest for non-payment or short payment. कब आएगा बेटा इंटरेस्ट? देख के तो बोलो यार, मेरा चेहरा मत देखो ऐसा प्लीज. प्लीज एटलीस्ट सी एंड टेल, डोंट सी माय फेस लाइक दैट. आदित्य बोल रहे हैं अच्छा हुआ सर रिवर्स कर रहे हैं आप. उसके लिए तो कर रहा ना बेटा, वरना मैं क्यों अपना टाइम स्पेंड करता इतना? करता भी नहीं मैं इतना टाइम स्पेंड. एडवांस टैक्स पेड, पेएबल नहीं बेटा, पेड. मैं पेएबल लिखा है क्या आपको? पेड लिखा है ना? बेटर. मतलब मीनिंग पूरा चेंज हो गया उसमें. If advance tax paid is less than what percent? 90% of tax payable. Then for the difference we'll charge interest. At what rate? 1% per month or part thereof. From which date? First day of assessment year. Till the date of completion of assessment. Underline करो. First day of assessment year till completion of assessment. Underline करो. Come on. राहुल का रिएक्शन, सर अगर आप रिवाइज नहीं करते तो हमको याद भी नहीं रहता था ये, इसलिए कर रहा ना बेटा. राहुल मिला नहीं क्या अभी तक तेरे को? 234B. प्लीज अंडरलाइन करो उसको. सर किए ना? बोलो आंसर वापस. 234B is interest for what? Guys reply, come on. Non-payment or short payment of advance tax. Interest will apply when advance tax वापस paid. Advance tax paid is less than 90% of tax payable. For difference, we will charge interest. At what rate? 1% per month or part thereof. From which day? First day of assessment year till the date of completion of assessment. I already solved an interesting question on that concept. One question we have given 234B also, 234C also. Now tell me, for 234B, tax as per whom is considered? AO, excellent. For 234C, tax as per assessee, because we will see something called returned income. That is as per return of income. ये पॉइंट सबसे पहले लिखा है मैं आपको, रिटर्न ऑफ इनकम. यार बोला ना यार, मैं सर वो क्वेश्चन सॉल्व भी करे थे हम लोग. फॉर 234B टैक्स एज पर एओ, 234C टैक्स एज पर रिटर्न ऑफ इनकम. 234C इंटरेस्ट कैसे आएगा? एक्चुअली इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आएगा. टाइटल नाम उसका टाइटल है इंटरेस्ट फॉर डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स. रिपीट अगेन, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. हाउ मच यू हैव टू पे एक्चुअली? 15. व्हाट इज द बेनिफिट दे गिव? 12 पे करो, इट्स ओके, चलेगा, हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे. सेकंड इंस्टॉलमेंट हाउ मच इज एक्चुअली पेड? 45. 36. थर्ड 75. मिनिमम 100. नथिंग. फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स दे गिव ए स्मॉल लिवरेज. द लिवरेज, स्मॉल कंसेशन बेनिफिट, जो भी बोलना है बोलो यार. नेक्स्ट सर याद है ना ये सब? समा टेलिंग, हाँ अभी याद आ गया सर पूरा. गुड. याद तो आए ना अभी? I hope we are clear. 234A also one question we solved. अभी ABC का टाइटल मुझे बोलो. What is 234A title? Interest for delay in filing return of income. What is the due date of return of income? सर मैं ऐसा पढ़ा है क्या? इंडिविजुअल ऐसा, कंपनी ऐसा, किस्सा बोल रहे यार. हाँ सर, कभी किसी को पूछे ना आपसे ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, ऐसा मत बोलो इंडिविजुअल है तो ऐसा, कंपनी तो ऐसा. वो दैट इज ए हॉरिबल आंसर. आंसर शुड बी 30th September, I mean 31st October in 3 cases. What are 3 cases? Company, other than company is subject to tax audit. Partner of a firm, if the firm is subject to these 3 cases, 31st October. Any other case 31st July. समझ रहे क्या? अब मुझे बोलो, एक्सपर्ट का ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम क्या रहेगा? 31st October. ये महीने में फाइल करेंगे रिटर्न. समझ रहे हैं मेरी बात? बोलो, शिवा तेजा का रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू डेट क्या रहेगा? आई मीन इफ आई एम टैक्स ऑडिट पर्सन, 31st October. नॉन टैक्स ऑडिट, दैट्स इट. अब मैं टैक्स ऑडिट हुआ नहीं है वो छोड़ दो. नेक्स्ट पॉइंट. आप लोग बहुत स्मार्ट है.
कोई स्टूडेंट मेरे से पूछ रहा था स्टार्टिंग में, सर आप सरचार्ज पे कर रहे हैं क्या? स्मार्टर वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, यू नो. ध्यान दो यार. नेक्स्ट पॉइंट. 37%. नहीं नहीं नहीं, वो लेवल पे नहीं गया अभी यार. चलो नेक्स्ट. 78%. क्यों भाई? अनएक्सप्लेन्ड अनडिस्क्लोज इनकम है क्या? आई मीन भगवान की दया से अभी तक वो 78% कैटेगरी में तो गए नहीं. आ जाएगा. अरे ठीक है. एनीवेज, कैन आई प्रोसीड? साक्षी, why is that sad face put up? Smile a little in life, no? Good for health. Yeah, please. Come on, next. Section 60. Transfer of income without transfer of asset. 61. Revocable transfer of asset. 62. 63. बोलो, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट का मीनिंग क्या है? रिवोकेबल का मीनिंग क्या है? बोलो. मस्त बोले ना, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट. बोलो रिवोकेबल क्या है? रिवोकेबल मीन्स देयर इज अ राइट टू टेक बैक और राइट टू रीअज्यूम द पावर. बोलो वापस. राइट टू टेक बैक और राइट टू रीअज्यूम द पावर. यू गेटिंग माय पॉइंट? वापस बोलो. राइट टू टेक बैक और राइट टू रीअज्यूम द पावर. अच्छा क्लियर है ना बेटा? बोलो. व्हाट इज 234A हेडिंग? मैं छोड़ूंगा नहीं आज, सवाल ही नहीं है. बाकी सब क्लास कैंसिल करा दूंगा, पूरा यही करूंगा मैं. बोलो. इंटरेस्ट फॉर डिले इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम. 234B. Interest for non-payment or short payment of advance tax. How much is that short? Less than 90%. Excellent. 234C title. Interest for deferment of advance tax. And interest will come 3 months, 3 months, 3 months, 1 month. That is standard. I already told you that won't change. Clear, no? Speak out. What is the meaning of revocable transfer? Right to take back or right to reassume power. 64(1)(2). Remuneration of spouse from a concern in which other spouse has substantial interest. 64(1)(4). Transfer of asset to spouse. ये आंसर तो दे रहे आप लोग, बट वो invested in business. We please see capital on first day of previous year. Whoever wrote the exam, majority of them have done correctly. Some of them have screwed up very badly. And they have calculated based on months basis. That is nonsense. I'm telling you. Please don't repeat that mistake anytime. Clear, no? We will see capital on which day? First day of previous year. Good. 64(1)(6). Time pass. Transfer to son's wife. 64(1)(7). Benefit of spouse. 64(1)(8). Benefit of son's wife. 64(1)(A). Clubbing of income of minor child, and the parent will get exemption of amount clubbed or 1,500, whichever is lower. And 1,500 is not per income, it is per child, and there's no limit on number of. Thanks to Aditya. Good. 64(2). Member to HUF. 65. Recovery of tax. Keshav G. Morarji. Cross transfers. Good. Manjula Jesha. Srimati. बोलो आंसर. बोलो आंसर. बोलो. गुड. दैट इज हाउ द लैंग्वेज शुड कम. इंडेक्सेशन कैन बी क्लेम्ड. आधे लोग बोल रहे, आधे लोग वो आधे लोगों को देख रहे जो आंसर बोल रहे. अरे कैसा आता है तेरे को? कैसा आता मतलब यार रिवर्स करे आ रहा है और क्या? नो, सम फ्रेंड्स व्हेन दे टेलिंग आंसर, अदर फ्रेंड्स आर सीइंग देयर फ्रेज. बहुत पढ़ रहा है और ये रिएक्शन नहीं, कुछ नहीं पढ़ रहा है, कुछ नहीं. फिर वो सोचता अंदर बहुत झूठा है ये, पढ़ता नहीं, बोलता कुछ नहीं बोलता, फिर पढ़ रहा है, एग्जाम लिख रहा है, टॉपर आ रहा है, लेके जा रहा है प्राइज. बोलो. व्हाट इज मंजुला जेशा? इंडेक्सेशन कैन बी क्लेम्ड फ्रॉम द ईयर इन विच प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड द एसेट. करेक्ट, नो यार? बोलना बेटा. नेक्स्ट. 56(2)(7)(B. अभी नहीं बोलेंगे तो जो भी आंसर नहीं बोले बाहर भेज दूंगा उनको. अभी 2 पॉइंट्स बोला मैं आज.
10 बार रिपीट कराया आपसे. This section applies when issue price is more than face value. What value? And taxability is on difference between issue price and fair market value. Selling price क्या है मेरे भाई? हाँ, बहुत फर्क है. सेलिंग मत लिख, बहुत फर्क पड़ता है दोनों में. अगर आपका गर्लफ्रेंड का नाम प्रिया है, बाय मिस्टेक टाइप करते वक्त पी गया, रिया लिख, खत्म कहानी. हो गया ना. एक लेटर में बहुत फर्क पड़ता है. एग्जाम्पल बोल रहा मैं, एक्स नहीं है. क्या हुआ? मिसेस माइक. हाँ, मिस माइक, करेक्ट. किसका? एक्स का. कुछ भी ऐसे थोड़ी नाम है. मतलब मैं सी आई नेवर स्लिप आउट माई टंग जस्ट लाइक दैट यार. डोंट वरी, वो सवाल ही नहीं है. 56(2)(8) interest on compensation, interest on enhanced compensation, taxable in the year of receipt, style action at what rate? Legal expense क्या करेंगे? But if legal expense related to capital gains, you reduce, because in capital gains we can reduce. And if it's business compensation, take under PGBP. One question we solved. X question. सर X बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार वो. सर याद है ना वो क्वेश्चन? Day before yesterday, 2 days back, at the end of the class we discussed that question. Good. 56(2)(9). Advance money forfeited. When? On or after 1/4/2014. 56(2)(10). That's it. Are we clear? हाँ वो भी है ना, लिख देंगे वो भी. 222A. Release of assets. 222B. Debentures to any shareholder or bonus shares to preference shareholder. Ayush, that Ayush. No, sorry, Puneet. क्या है? आंसर ही नहीं आ रहे. बोले क्या अंदर मन में? थोड़ी चीजें ना बाहर बोलना पड़ती है, अंदर सोचे तो कुछ नहीं होता है. 222C. Distribution of assets on liquidation. Clear है ना? In that gap of 1 minute, I was talking to Puneet, half of the friends. हाँ अभी पूछो सर, पूछो. 222C. Distribution of liquidation. Take, keep it. 222D. Distribution on reduction of share capital. Next वाला गलत बोले ना बेटा, देख लो. Applies to a company in which public are not substantially interested. They have given loan or advance. Loans नहीं, loan or advance to a shareholder who is holding 10% or more, or to a concern in which such shareholder has substantial interest, or any other person for the benefit of such shareholder. सर इतना अच्छा डायग्राम ड्रॉ किया ना यार मैं. ठीक है, आंसर तो याद है ना. अरे विनोद सर के एग्जाम्पल यूज किए ना यार हम लोग. सर क्लियर है? दैट इज द स्टोरी. हाँ वो भी है ना. 11 क्या है? 56(2)(11) बोल रहे क्या? ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. राइट, लिख दूंगा बेटा, तू फील मत हो जा, कुछ भी तेरे लिए. नेक्स्ट, व्हाट इज 80(T)(A)? इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट फॉर नॉन सीनियर सिटीजन. ये नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल. अब नॉर्मल लोग भी होते हैं क्या? तो फिर नॉर्मल नहीं बहुत बोलो यार. नॉन सीनियर सिटीजन. क्लियर है ना? कितना है डिडक्शन? इंटरेस्ट ऑन 10,000 whichever is lower. Interest on what account? 80(T)(B). सेविंग्स बैंक एंड एफडी दोनों मिलके, अलग अलग नहीं है. कितना है? 50,000 ऑन इंटरेस्ट whichever is lower. पेएबल नहीं भाई, रिसीवेबल है. पेएबल क्या होता? पेएबल, हाँ या करेक्ट नो? आदित्य, विल यू टेक टीटी और टीटीबी? ए नो पक्का? ठीक है. चल क्लियर. व्हाट इज 1016? स्कॉलरशिप. देन 1043
रिवर्स मॉर्टगेज, याद है? सीनियर सिटीजन बेटा है, देख नहीं रहे, स्टूडेंट बोल रहे हैं हाँ सर एक काम करो ना, एग्जाम में आप ना आ जाओ, ऐसा हमको हिंट दे दो, बाकी हम लिखेंगे स्टोरी, पेपर ही लिख दो सर ना, तो उंगली दिए तो क्या था दोस्त? लमसम और इंस्टॉलमेंट, हाँ वंडरफुल, करेक्ट आंसर। 1037 compulsory acquisition of urban agricultural land. I told this. I only told. To you only I told. Here only I told. और कुछ? ATC बाद में रिवाइज करेंगे, अभी नहीं। सेक्शन 1 क्या बोला था? और कुछ बोले तो 1010 BC, वाओ, अरे कैसा बोल सकते हैं यार, 1010 BC डिजास्टर फन, करेक्ट नो? नेक्स्ट और कुछ बोला था तू अभी? 139(1) ड्यू डेट ऑफ फाइनल रिटर्न ऑफ इनकम, याद है ना? व्हाट इज द ड्यू डेट? 31st October in 3 cases. What are 3 cases? Companies other than companies subject to tax audit, then partner of a firm if the firm is subject to, वापस बोलो तीनों पॉइंट, बोलो वापस तीनों पॉइंट। कंपनीज, सेकंड other than companies subject to tax audit. What is tax audit? We'll talk in detail when I go to PGBP. ठीक है ना? वो तो उतना तो पता है अपने को, 1,50,00,000 वाला पता है, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग एक 1 वीक के बाद। मास्टर बोलो, what are 3 categories? First one, companies. Second, other than companies subject to tax audit. Number 3, partner of a firm if the firm is subject to tax audit. All 3 cases, 31st October. Any other case? That's it. So getting clarity? $224 income, 115 QA buyback of shares, tax at the rate of 20% plus surcharge plus cess. For shareholder it is exempt under section 1034A. Cap 46 capital A other than shares, shareholder is taxable. लिखा था मैं ये चीज, इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। 80U नहीं, अभी नहीं, बाद में 80 का बाद में। हाँ, सेक्शन 14 बोलो बेटा, याद है ना आपको? ग्रॉस टोटल इनकम, गुड। दैट इज एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट ओनली, नो? ठीक है, एनीवेज, सो आर वी क्लियर दिस पॉइंट्स? सम आर टेलिंग वाओ बोर्ड पूरा फुल हो गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, that this is not entire syllabus. This is only your 40% or only 60% of your syllabus. That's it. You have to understand that for this only, if it is like this, by the end of classes, there is no question of leaving. By the end of classes, one area will not be sufficient. I should go to next page only to fill the balance sections. That is for sure. Now, after all this revision is done, वैल्यू नहीं है मेरा, तो मेरा भी लेना ना यार। मेरे को मजा नहीं आता इस पे। देखिए बस, चलो proceed. So I will clear this point, everybody. Now I'll ask you one question. You think properly and tell me the answer before you give an answer to me. Yeah? Is learning through section numbers make sense or not? When I'm revising with you, am I revising numbers with you? I'm revising concepts with you. Please understand that. So if any of your friend is telling section number is not relevant, उसको क्वेश्चन पूछो, वो आंसर नहीं बोलेगा, फिर आप खुद रियलाइज करेंगे कि सेक्शन नंबर पता होने की वजह से अपने को आंसर याद है। Clear, no? I'm giving this humble suggestion to you because if your friends are telling you that section numbers are not required, which I will only tell you directly that section number is not mandatory to write the exam at CA inter level. Final level it is mandatory anyways. Final में तो आपको ऑप्शन ही नहीं है, तब तो कोई बोर्ड भी नहीं सकता, उसको दो एक लेफ्ट एंड राइट। फाइनल में मैंडेटरी नहीं है, तो फाइनल में तो कैसे में मैंडेटरी है, बट इंटर में भी ना, when you learn with section number you actually get perfection, and more than perfection, first confidence will come and go to the exam more positively. And in exam 3-4 सेक्शन है, छोड़ के आओ सर, मतलब ऐसे टाइम पास में नहीं। जो क्वेश्चन पूछ रहा है, यू राइट विद सेक्शन नंबर, पर्सन हु इज करेक्टिंग विल गो क्रेजी,
मतलब यार ये सेक्शन नंबर के साथ आंसर लिख रहा, मतलब ये क्या आदमी है ये, हाउ हैप्पी विल फील, जस्ट इमेजिन. It looks so amazing in the exam. That is why I make you learn with section numbers. And that is the right way of learning. It cannot be just like that. इंटर में मतलब फाइनल में देख लेंगे सब कुछ, फाइनल में देख लेंगे सब कुछ, तो अभी घंटा इंटर में क्यों, सीधा फाइनल में आ जाना, फिर देख लेंगे सब कुछ. कंट्रोल शिवा, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. नो, इट कैनॉट बी समथिंग दैट सब कुछ फाइनल में ही करेंगे, तो इंटर में क्या करेंगे फिर? जो इंटर सिलेबस में हो तो परफेक्ट ही करना है ना. अब मुझे आप एक बात बोलो, अगर सेक्शन नंबर जरूरत ही नहीं है तो आपका आईसीए बुक में सेक्शन नंबर क्यों है? फिर आईसीए मेटल में निकाल दो सेक्शन नंबर. You're getting my point? आप कंपनी लॉ जहाँ पे भी सीख रहे हैं आप, whatever sir it is, any sir wherever you're taking coaching, are they teaching without section number? They are a fool, you are a fool if you do that. Both of you are fools. जो पढ़ा रहे वो भी फूल है, जो बस सुन रहे वो भी फूल है. Because acts like company law, corporate law, or your what do you call taxation law, when your contract act, when you're trying to learn some laws, that cannot be learned without section number. Man, that's a wrong approach. Section number जरूरी है, और इसमें जितना आपको याद है उतना अच्छा है. That's why I always told you one time very clearly that don't try to mug up section number. सेक्शन नंबर याद रखने के लिए कोशिश मत करो, कॉन्सेप्ट याद रखने की कोशिश करो. और जब कॉन्सेप्ट याद रखने की कोशिश करेंगे ना, ऑटोमेटिकली नंबर याद हो जाएगा यार, नहीं होने का सवाल ही नहीं है. कैसा याद है आप, क्या हो गई 172, 174 कैसा बोले आप, 225 कैसा बोले आप, सेक्शन 4 कैसा आया आंसर? दैट इज ऑल बिकॉज दे ऑलरेडी वेंट टू द बॉडी. मैं अगर 10 साल के बाद भी पूछूंगा ना आपसे आंसर, 100% बोलेंगे आप. Night 1 o'clock, if I call Aditya and tell Aditya section 4, he will tell sir charitable section, good night sir. वो फोन ही नहीं उठाएगा क्या? ठीक है, एग्जाम्पल बोल रहा हूं मैं. That is how you take it inside automatically. You're getting my point, everybody? That is the right way of revision, man. I hope this entire time and effort what I have taken made sense for everyone. Speak out, guys. I have taken some effort all this for a reason. In fact, morning में सोचा नहीं था when started the class. I mean, before coming to the class, I didn't plan for this revision. But when I came here and I looked at the monitor, I saw that lecture number is 35. So then I realized that almost 60% के ऊपर हो चुका है syllabus. तो मुझे लगा एक बार पूरा रिवाइज करते कुछ स्टार्ट करने से पहले. That is where I thought I'll revise. I'll spend half an hour time is what I thought. But person like me can't compromise. So this much time it took. नहीं कर सकते compromise यार. ठीक है. हाँ, completion. That is what is the problem. कंप्लीशन में ही फोकस है तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते. कॉम्प्रोमाइज करना है तो फिर बहुत सारे काम है लाइफ में, इसको छोड़ के वो कर लेंगे. सिंपल. बिकॉज आई रेस्पेक्ट दिस मोर देन, सी वी आर ऑल डूइंग फॉर मॉनिटरी वर्क ओनली. आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर डूइंग सम चैरिटी एंड ऑल. वी आर डूइंग सम सर्विस, वी आर डूइंग सम एक्टिविटी फॉर मेकिंग मनी. आई एम नॉट सेइंग नो, बट मोर देन मनी फर्स्ट आई सी रेस्पेक्ट इन दिस. आई टेक दिस एज ए डिवोशन. मैं ऑफिस में गया तो ये सब नहीं करता. व्हेन आई गो टू ऑफिस, फर्स्ट ओनली थिंग व्हाट आई थिंक इज, क्लाइंट है, कितना ज्यादा फीस ले लूं, कितना इसको लूटू, कितना ज्यादा काम करके कितना ज्यादा फीस ले लूं, वही दिमाग में चलते रहता. आई एम ओपन, मेरा दिमाग वही बोलता बस कितना ज्यादा फीस ले सकते हैं इससे. बिजनेसमैन है यार, बढ़ बढ़ के पैसे कमा रहे, तो मुझे देने के लिए रोक क्यों रहा है? बट मैं जब क्लास में आऊंगा ना, मेरा दिमाग रिवर्स चलता, कितना ज्यादा दे सकता है दे, कितना ज्यादा पढ़ा सकते हैं पढ़ा, कितना सेक्शन बोल सकता बोल. वो ये स्टाइल में जाता है इधर दिमाग, उधर दिमाग अलग है. उधर सिर्फ बैंक बैलेंस पे दिमाग चलता है. क्या कर सकते हैं अभी, वो बिजनेस वाला बंदा है ना. माइंडसेट इज डिफरेंट ऑटोमेटिकली. एनीवेज, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो प्लीज, यू गाइस आर having good potential with you guys. Majority sections are coming, answers are coming, and some sections which I didn't write also you are telling. That means you guys definitely remember something or the other. And in this class there are people who remember almost 90% of this. Some are there who remember 80% of this. Some are there who remember 60% of this. And I'm sure everybody in this class are there who will remember at least 50% of this. कम से कम 50% तो बोल ही देंगे. Clear, no? So my only suggestion is that balance whatever 40% is left out, that also will do beautifully and fantastically. I'll make sure that this tax will be a lifetime experience for you at CA inter level. Final में tax वापस पढ़ेंगे, but for inter level tax will be one of your favorite subject. I'll not tell it will be the favorite for you because other subjects also can be a favorite, but whatever is your favorite list, in that one will be tax. That guarantee I'll take, because that I'll take it as a challenge always when I take any class, because this is a beautiful subject and articleship में कैसे भी मुझे याद करेंगे. There is no doubt about it. जाएंगे ना ऑफिस, आर्टिकलशिप में जाते सबसे ज्यादा काम क्या करेंगे आपसे? टैक्स. आइडियाज, डाउट ही नहीं है. हाँ, फाइनल भी याद करेंगे. हाँ, फाइनल ऑल्सो याद करेंगे डेफिनेटली, डोंट डाउट. सर क्लियर?